Srimati Urmila Devi Ayurvedic College. I thank you everyone for their cooperation and hope the same in the future. Now, I request our principal, Dr. Meenakshi Nath, to please share her thoughts with us. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Mridu. Good morning, everyone. आप सबका आयुष विभूति इस वेबिनार श्रृंखला के 3वें दिन में हार्दिक अभिनंदन है। आज का यह दिन समर्पित है आयुर्वेद की उस विधा को जो स्लोली एंड स्टेडीली अपना वर्चस्व स्थापित करती जा रही है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ पंचकर्मा की, जो दोषों के पुनर्भव को हमेशा के लिए रोकने का सामर्थ्य रखती है। और इस बहुजन हिताय विषय में हमारे ज्ञान की वृद्धि करने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित है पंचकर्मा विषय के विशिष्ट ज्ञाता डॉक्टर अनिल भारद्वाज। आज के इस सत्र में आपका बहुत स्वागत है सर, एवं हम सब आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया एवं इस आयुष विबोधिनी सीरीज को गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। डॉक्टर विदु, आगे आपके लिए। Thank you, ma'am. Your words are really a motivation to all of us. Now, I would like to introduce our guest speaker, Dr. Anil Bhardwaj, Associate Professor in Panchkarma in Rajiv Gandhi Government Ayurvedic College, Paprola. He has done his BMS from Rajiv Gandhi Government Ayurvedic College, Paprola, MD in Panchkarma from NIA Jaipur, and has completed his PhD from Avdesh Pratap Singh University, Rewa, Madhya Pradesh. He has many feathers in his cap, with a clinical experience of 22 years and teaching experience of more than 11 years. He has published more than 35 articles and has been a resource person in more than 26 national and international seminars. He is the nodal officer in the Regional Center of Excellence in Ayurveda for Geriatric Health Care, a project initiated and sponsored by Ministry of Ayush since 2010. His 2 books are under publication, and he has guided 23 students in post-graduation so far. He is also the member of departmental review committees of MD and PhD Ayurveda of Rajasthan, Maharashtra, and many more states. He has organized 34 webinars and 2 conferences, and he is a subject expert in the selection committee of lecturers for the state of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. Sir, it is an honor for us to have such an overwhelming personality with us. Now, I request you to kindly please share your views with us. Over to you, sir. Thank you, Dr. Mridu. First of all, I would like to pay my sincere regards, thanks, and extend my gratitude towards the organizers of this webinar, especially principal of this college, vice principal, as well as chairman of the organizing committee and this college. Now, I would like to share my presentation. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay, thank you. Dear friends, today we will discuss regarding the disease which is very difficult to treat, now called Parkinson's. It's very much prevalent in this world. Friends, this is a disorder of brain characterized by shaking and difficulty with walking. You can say it is also causes difficulty in movements and coordination. The disease is associated with damage to a part of brain which controls the muscle movements. This is first introduced by Mr. James Parkinson in 1917. It was also called shaking palsy. Later it was described as a syndrome in 1800 century by French neurologist Henry. This if regarding the introduction of this Panchkaram, the role of Panchkaram in this Parkinson's disease, first we will try to understand what is Parkinson's disease. And Parkinson's
is a disease which is a progressive neurodegenerative disease that belongs to a group of conditions called motor system disorder. All of we know that whatever the sensory signals which we receive from our skin or any part of our sensory organ, that goes to the brain. From there, it sends some messages in the form of motor messages, that is called motor system of our body. With the help of this motor system messages, our body works out all the activities which we do, which we activate, that are done with the help of the message which we receive from the brain through this motor system. If there is problem in any place in between this system, whether sensory or motor, we won't be able to receive a signal, we won't be able to do the activity. Now this Parkinson's disease, as we know, it is yet to be cured, and sufferers get worse over time as the normal body functions. Most of the functions which are involved, which are affected due to this disease, are breathing, balance, movements, and heart functions. The Parkinson's disease most often occurs after the age of 50 years. Now, this is the disease of old age. All of you know, most of the persons who are after the age of 50, who are in old age, most of the persons, they suffer from this disease. Slow deterioration of the nerve cells, it is due to the slow deterioration of the nerve cells in the brain. Specifically, nerve cells which decrease, which release dopamine, those are decreased, those are died, due to which the release of dopamine is decreased, and hence the activities of dopamine are obstructed. The dopamine is a natural substance which is found in the brain that helps to control the muscle movement throughout the body. Now, there are two, these are not hormones, these are neurotransmitters. There are two types of neurotransmitters which controls the activities of our body. The Parkinson's disease is generally considered to affect the older population. However, it is estimated that 1 of 10 people diagnosed with Parkinson's disease is before the age of 50. Hello? Sir, yes, sir. Please continue, sir. Okay. Now, this Parkinson's disease affects both men and women. If we talk about this disease affect the persons who are affected from the disease, those are men are more prone to disease as compared to women, at 50% more prone to this disease. Now, most of that persons, as I told you before, that persons whose age is above 50, they are more prone to this disease. However, the persons who are less than 80, they are also they also get affected from this disease, but they are very less. You can say 1 out of 10 people who affect from Parkinson's disease. Now, what about the life expectancy? Now, this life expectancy, people with Parkinson's disease have about the same life expectancy as normal population. However, complications during the later stage, we will talk about these complications later on. The disease, like what is the cause of this? Choking, pneumonia, and falls that can fatal. The disease progresses at different rates in different people. Now, the more severe progression is often seen in the people who develop PD at early age. As I told you, when the person suffer from the disease after the age of 50 or 70, they usually live their whole life. However, the person if suffer from this disease before the age of 50 years, that person can the life of that person can be reduced, and those complications are more in these persons before the age of 50 years. The Parkinson's disease is caused by progressive loss of dopamine in brain cells. Now, what are the cells which release dopamine in our brain? There are this is called substantia nigra. These are basal ganglions. It is also called substantia nigra. Now, two types of the neurotransmitters which are released from this substantia nigra. Two are main neurotransmitters. One is acetylcholine and second is dopamine. We will talk about only these two neurotransmitters. As the cell dies, less dopamine is produced and transported to striatum. This is the part of brain. This is the area of brain which coordinates our movements. Now, under the influence of dopamine, signals from striatum regulates the forms of movements. All the movements of our body are regulated by the dopamine. Parkinson's disease symptoms begin when the loss of dopamine reaches at a critical level. That is typically between 50 to 80%. However, if the person, the cells within the substantia nigra, dopamine secreting cells died up to 80%, patient will not 50 to 80%, patient will not
show any type of symptom. However, if it is damage is more than this, only then these symptoms occurs in the patient. Now you can see here, this is the part of brain which is called substance nigra, which releases this हार्मोन. अगर हम पंचकर्म में आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में कंपवात को कहाँ रखा गया, हम थोड़े से सिम्टम्स जो है, हालांकि कंपवात के नाम से भ्रेत्री अथवा लघुत्री में किसी भी प्रकार की कोई वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक लक्षण है जो आयुर्वेद में संहिताओं में दिए गए हैं, जैसे विपथु है जिसको शेकिंग कहते हैं, प्रिवेदन है या वेपन है, एक्सेसिव शेकिंग बोल सकते हैं इसको, शिरह कंप, हेड ट्रेमर्स, स्पंदन या कंपन, इस प्रकार के सिम्टम्स हमें आयुर्वेद में देखने मिलते हैं. हालांकि ये वातव्याधि, हम इसको वातव्याधि के अंतर्गत मानते हैं, तो वातव्याधि में इसका एज इट इज वर्णन ना दे करके केवल इनके सिम्टम्स के आधार पर, क्योंकि आचार्य चरक ने कहा भी है कि सभी व्याधियों के नाम देना संभव नहीं है, तो वैद्य को अपनी बुद्धि के अनुसार उसके लक्षणों को देखकर, दोष दूसरे समूचनों को देख करके उसकी चिकित्सा करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसी के आधार पर अपना उसका नाम भी दे सकते हैं. तो कंपवात का वर्णन जैसे मैंने कहा भ्रेत्री लघुत्री तो नहीं है, लेकिन एक संहिता है आयुर्वेद में भास्वरेज्यम. तो भास्वरेज्यम में इसको पहली बार इसके जो वर्णन देखने को मिला कंपवात के नाम से, और इसके जितने भी क्लिनिकल फीचर्स भास्वरेज्यम में वर्णित किए गए हैं वो सारे के सारे फीचर्स जैसा कि पार्किंसन डिजीज में वर्णित है उसी के अनुसार हमें देखने को मिलते हैं. तो हम कंपवात की निरूक्ति की बात करें तो कंप का मतलब होता है, कंप का शब्द जो है वो बना है कंप प्लस सुफिक्स लगता है इसमें घन प्रत्यय, तो कंप शब्द में घन प्रत्यय को लगाकर कंप शब्द की उत्पत्ति होती है, जैसा कि वाचस्पत्यम में कहा गया है. वाच शब्द की बात में सब जानते हैं कि वाकते गंधे धातु में कृत प्रत्यय करने से वाच शब्द की उत्पत्ति होती है. इन दोनों को मिलाकर कंपवात शब्द हम वर्णित किया गया है. जैसे कि कहा गया कि इसको आयुर्वेद जहाँ मॉडर्न कंसेप्ट से अगर लें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आफ्टर अल्जाइमर. At first, we will call the most neurodegenerative order is Alzheimer's disease, and second one is Parkinson's. When we talk about the risk factors of Parkinson's disease, the first one is age. As I told you earlier, the persons whose age is more than 50, they are more prone to this disease. Positive family history, because it also runs in genetics. If someone in the family of a patient is suffering from this disease, he is more prone to this. Male gender, that also already explained. Now, next one is environmental exposures. Now, the persons who work in the industries or fields which use herbicides, pesticides, metals, farming, rural residents, wood pulp, steel oil industries, they are more prone to disease due to the damage of the that part of brain due to these chemicals. Even the well water using persons, because long ago 2 or 30 years before, the peoples of the villages were using well water. Now well water is very superficial, and that is the cause of the disease due to this well water is because that well water gets polluted with the herbicides, pesticides, all the pollution of the villages or industries that can cause the pollution of water, which further helps in progression of this disease. However, these are reversible factors. We can stop the pollution of the water and the disease can be controlled. However, in these days, the water is supplied by the municipality, which is usually purified. Usually, I say usually, not always. Next one is life experiences. If a patient has some sort of trauma in his life, have emotional stress, personality traits such as shyness, depressiveness, those patients are also more prone to this disease. Now, there is an inverse correlation between cigarette smoking and caffeine. Intake of these things make control. Case control studies shows that these persons are less prone to this disease. However, I want to promote it. Even then, it is useful. Now, आयुर्वेद के अनुसार अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वात व्याधि के 2 कारण माने जाते हैं, धातु क्षय एवं आवरण. धातु क्षय और आवरण की मतलब आमरस जो बनता है, हमारी धात्वग्नि, जब भी हमारे शरीर की जठराग्नि मंद हो जाए तो अनरस का उचित रूप से परिपाक ना होकर के जो अनरस बनता है वो आम रूप में मिलता है. दैट इज नॉट प्रॉपर्ली प्योरली डाइजेस्टेड, प्रॉपर्ली और कंप्लीटली डाइजेस्टेड.
वो आम जो होता है वो एक पॉजिटिव फैक्टर बनता है व्याप्त व्याधि का, क्योंकि आम जो होता है स्रोतों का अवरोध करेगा, स्रोतोवरोध होंगे तो उस जहां का स्रोतों का अवरोध होगा वहां पर वायु का आवागमन कम हो जाएगा और इसलिए वहां पर दोषों का और वायु सहित दोषों का प्रकोप होगा। और इसी कारण दोषों का प्रकोप होगा, अवरोध होगा, अवरोध होने के कारण धातु क्षय भी होगा, धातु क्षय के कारण फिर से बात प्रकोपित होगा। और धातु क्षय की बात करें तो इसके कारण होते हैं एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, एक्सेसिव वॉकिंग, रनिंग augments the वात ह्यूमर इन द बॉडी, इट ऑल्सो लीड्स टू रूक्षता। तो ये सब कार्य करने से हमारे शरीर में वायु की वृद्धि होती है, रूक्षता बढ़ जाती है। रूक्षता आपको पता है, रूक्ष गुण वायु का, रूक्ष और शीत गुण के कारण वायु बहुत ज्यादा प्रकृति, ऐसे तो 6 और 7 गुण, कहीं 6 और कहीं 7 गुणों का वर्णन किया गया है, लेकिन रूक्षता और जो शीत गुण होता है इससे वायु की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये सब कारण आगे फर्दर लीड करते हैं धातु क्षय में और वात का प्रकोप होता है, जिसके कारण हमें वात व्याधियों को साथ हमें एक 2-4 होना पड़ता है। Now this is the pathophysiology. If we talk about the modern type of pathophysiology, let me show you. This is substantia nigra. You can see, if we see a picture of in CT scan or some other colored imaging, this is the substantia nigra. Both of sides you can see it very well. The substantia nigra of right side is more dark. It is called healthy substantia nigra, whereas left side is degenerated. Degenerated is less colored, you can say. This is degenerated. Now this cell degenerate in substantia nigra. Substantia nigra is destroyed. Dopamine decreases, muscle cell activation decreases, and movement control decreases. As I told you before, two type of neurotransmitters which we will discuss in this which are released from substantia nigra. Normally, acetylcholine and dopamine. These are the two neurotransmitters which are released by substantia nigra. Thus, both of these neurotransmitters are excreted in an equilibrium, right? But in Parkinson's disease, the depletion of dopamine occurs from the dopaminergic neurons of substantia nigra, because due to the death of these cells which release dopamine, the secretion decreases, and its depletion further is not able to control the hyperactivity of acetylcholine, because if we see what are the working of acetylcholine contracts smooth muscles, dilates blood vessels, increases bodily secretions. And the activity of acetylcholine is controlled by dopamine. If dopamine will not control, it will decrease. It will not control the activities of acetylcholine. The activities, we can say, smooth muscle contracts the smooth muscle. Acetylcholine contracts. This is when we discuss this symptoms like rigidity. Now this rigidity is due to the overworking of acetylcholine. It also dilates blood vessels and secrete. Body secretions are increased. This also causes the drooling of saliva in this type of patients. आयुर्वेद के माध्यम से बात करें हम तो पूर्व रूप के बारे में, तो पूर्व रूप वात व्याधि की हम ऐसे, जैसे मैंने पहले बात की कि वात व्याधि में कंपवात का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसको वात व्याधि मान करके वात के ही पूर्व रूप हम इसके अंतर्गत डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अव्यक्तम लक्षण तेषाम पूर्व रूप में तीसम, तो वात व्याधि के जो पूर्व रूप है वो है अव्यक्त लक्षण, की जो लक्षण होते हैं वो अव्यक्त रूप में रहते हैं। तो हम अगर अव्यक्त रूप में रहते हैं, पूर्व रूप कैसे हुए, तो इसकी बात करें कंपवात। जैसे कहा गया, चक्रपाणी ने एक अव्यक्त लक्षण के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि अव्यक्तम मीन्स लघुता, कि जो भी लक्षण मिलेंगे वो लघु रूप में मिलेंगे, तो उसको हम मान सकते हैं ये इसके पूर्व रूप हैं। और इसी प्रकार विजय रक्षित ने भी इसकी कमेंट्री करते हुए कहा है कि न अति अभिव्यक्ति, जो पूर्ण रूप से ज्यादा अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त ना हो, कुछ रूप में अभिव्यक्त हो, थोड़े से लक्षण आपको देखने को मिले, तो आप मान सकते हैं ये व्याधि के पूर्व रूप है। तो रूप के बारे में कौन कौन से लक्षण इसमें वर्णित किए गए हैं। अब रूप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे आयुर्वेदिक क्लासेस में तो इसका वर्णन जैसे मैंने कहा नहीं मिलता है, तो हम इसके वात व्याधि की पैथोलॉजी के कारण जो जो लक्षण मिलते हैं हम उसको सबको अगर कंपाइल करें तो ये लक्षण हमें संहिताओं में देखने को मिलते हैं, जो कि इसके साथ कोरिलेट किए जा सकते हैं। जैसे कर पादतल कंप, देह भ्रमण, निद्रा भंग, क्षीणमति, स्तंभ, चेष्टाहानि, विनमन, वाक विकृति, ये सारे लक्षण जो है वो पूरे मॉडर्न में जो पार्किंसन डिजीज के लक्षण दिए गए उनके साथ पूरी तरह से मैच करते हैं। धीरे धीरे वो आगे आएंगे, उससे हम डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कौन कौन से कार्डिनल सिम्टम्स मॉडर्न में जिसको हम आयुर्वेद से हमने कोरिलेट किया, हमने उसमें वर्णित किए गए हैं। तो ये है ट्रेमर्स एट रेस्ट, जिसको हम रेस्टिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, पॉजिटिव स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, रिजिडिटी, मस्कुलर रिजिडिटी, शफलिंग गेट, फ्लैक्स्ड पोस्चर, जिसको हम पोस्चर इंस्टेबिलिटी बोल सकते हैं। हम अगर बात करें तो डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिजीज कैन बी मेड विद सम कॉन्फिडेंस इन द पेशेंट हु प्रेजेंट फर्स्ट थ्री, मैंने देखो फर्स्ट थ्री को कलर किया है, तो फर्स्ट थ्री में से two of these cardinal symptoms should be found in the patient if you want to diagnose the patient with the Parkinson's disease: rest tremors, rigidity, and bradykinesia. Out of these three symptoms, two should be present, and then you can say confidently that this patient is suffering from Parkinson's disease. Tremor is particularly important as it is present in 85% of patients with true Parkinson's disease. A diagnosis of Parkinson's disease is difficult when tremor is absent. A unilateral and gradual onset of symptoms, these are called masked faces, decreased eye blinking, stooped posture. You can see this, the image which is shown in this slide this is stooped posture. Decreased arm swinging. When we walk, our arm swing front and back. However, in the patient of Parkinson's disease, arm swinging is absent. The next one is bradykinesia. First one is, I would say, first one is bradykinesia. I will discuss first one, this one, or timers I will discuss later on. The most disabling feature of Parkinson's disease is bradykinesia because it interferes with all aspects of daily living such as walking, rising from a chair, turning in the bed, dressing. All these activities or other activities of a patient becomes very difficult, these become slow down. And further, when the bradykinesia affects oropharynx, it can lead to difficulties in swallowing. And further, if it is in the advanced stages, you can say it may causes aspiration pneumonia and choking can lead to death. You can, if you can see, I will show you the video of this bradykinesia. Usually we tie up our buttons very fast. You just look at this patient; he is doing it very slowly. There are some other symptoms which are related to bradykinesia. Micrographia. Micrographia is very fine and small handwriting. These are the fine motor control. These are impaired because this is a decrease. This is due to a decrease in manual dexterity and handwriting. Hypophonia is short speech. Patient will speak, but you will not be able to understand. It is just like a whispering speech in advanced stages. Siluria is the drooling of saliva from the corners of mouth. These are the associated symptoms which are due to bradykinesia. Now we come to the tremors. The tremor at rest is one of the most characteristic feature of this disease, occurring in 70% of patients. Because a resting tremor is typically appears unilaterally. First distally. Distally means in the fingers, then wrist, then arm, then towards the shoulder and other parts of the body. Where it may have, you can say, pill rolling है, जब हम टैबलेट्स बनाते हैं, जैसे फार्मेसी में सब आयुर्वेद शास्त्र में काम करते हैं बच्चे, तो आप देखते हैं अपने हाथ से पिल बनाते हैं तो दो फिंगर्स और थंब का यूज करते हैं, तो पिल रोलिंग ट्रेमर्स हम इसको कह सकते हैं. Now these tremors usually spreads proximally, जैसे मैंने अभी कहा आपको, ipsilaterally, इसी साइड के रहेंगे, और occasionally to the leg before crossing to the other side of the body. However, the tremor may appear after later on. It may appear in the lips, tongue, jaw. Right? So these tremors are usually unilateral, becomes bilateral later on, and if patient is stressed due to some problem, these tremors worsens. In this picture, you can see very well.
We call it resting tremors, because when patient has rest, you will observe the tremors. However, if you ask the patient to do some activity like pick up a glass, the tremors will disappear. You can see this is a right hand is tremor. You can see the tremors in the hand. When patient tries to pick up the glass, tremors disappears. In the same way, tremors also disappears when you tie the buttons or do some other activity. Yani disappears with purposeful movements such as picking up some object. This is some video of the pill during tremors, you can see. I told you these are resting tremors. Yes. And the patient is doing some movement, some activity, tremors disappear. When hands comes to and rest, tremors again. Yes. The next one is rigidity. Rigidity is the resistance to passive movement. Whenever you try to do some passive movement of the patient, try to examine the patient from knee joint, hip joint, or some other activity, the patient will show resistance to your passive movement. Right? Because rigidity is a motor sign, it is detected as a resistance to passive movement in the limbs. It is often uniform in directions of flexion and extension. This is called lead pipe rigidity. But there may be superimposed etching, that is cog rigidity. Two type of rigidity are there. Lead pipe, like if you try to bend a pipe made up of some metal, you will feel uniform resistance throughout the procedure. However, in cog rigidity, जैसे रथ का पहिया के कीचे फंस जाता है, उसको एक झटके से दूसरे झटके से निकालते हैं छोटे छोटे से, उसी प्रकार की रिजिडिटी को हम कॉगविल रिजिडिटी कहते हैं. ये कॉगविल रिजिडिटी एक वीडियो है, एक बार आप देख लेंगे. Next one is shuffling gait. These are associated symptoms. Shuffling gait. Shuffling gait is a gait disturbance with shuffling, short steps, and tendency to turn and block is a prominent feature of Parkinson's disease. Now, fascinating gait. It is a classical Parkinson's signs. Whenever you see a patient with Parkinson's disease, he will always walk with short steps. That is due to its change center of gravity. He always try to find out his center of gravity. He always afraid of fall. That's why he walk with very short steps. Freezing of gait at some moments. This is also advanced feature of Parkinson's disease. It occurs commonly at the onset of locomotion. When the patient tries to or starts his gait, starts to walk, there is initial hesitation to start to walk, and later on, if try to turn after some distance, that will also causes you can say freezing posture of the patient. That is also due to its afraid of fall from the on the ground. So flexed posture. Now this is the abnormality of balance. The pose to fix or to regulate or to control the posture of the body is the function of our cerebellum. Now the abnormalities of cerebellum, you can say the decreased transmission of messages causes the abnormality in this balance and posture. It tends to increase in prominence of the disease as the disease progress. If we see the symptoms, this is the posture of the patient. Head is bended forwardly, this kind of flexion of head, stooping and tilting of upper trunk, tendency to hold the arm in flexed posture while walking. This is called non-swinging of arms, as I discussed earlier. Postural instability is one of the most disabling features of the advanced Parkinson's disease. It also contributes to falls and injuries, which leads to major morbidity and mortality of the patient. You can see this is the cerebellum, which controls the posture of the person.
These are some pics of postural changes. This is postural instability. This is due to rigidity. This is drooped posture. As I discussed, the additional motor feature of Parkinson's is freezing phenomena. This is also called motor block. It is most typical form. Freezing occurs as a sudden inability to step forwards while walking, at a turn, or just before reaching the destination. However, it is transient, which lasts for few seconds to minutes. You can see this is the video of this gait and freezing phenomenon. This is the freezing. The patient tries to turn around, stops, thinks, and starts its activity. This is the posture of the patient. These are some clinical features which are non-motor symptoms, you can call it. These all are associated with the Parkinson's disease. This depression, dementia, anxiety, cognitive impairment, sleep disturbances, sensory abnormalities and pain, loss of smell, anosmia. This is the olfactory disturbance of the patient. Now together these motor and non-motor symptoms, they together contribute too much burden to this disease. If you to call about dementia, this is 6 times higher as compared to normal aging. In loss of smell, anosmia, these are two components. Either patient is not able to detect there is any smell, or he may not be able to identify the smell, what type of smell it is. Right? This is common in Parkinson's disease. It may start several years before onset of Parkinson's disease and remain masked until the worker or some friend of this patient will not tell him that you are not trying to localize, or you cannot identify this smell. If we try to diagnose, the clinical diagnosis of Parkinson's is made on the basis of medical history and neurological examination only, because currently there is no laboratory test, there is no other test or imaging that can definitely establish this diagnosis. Only the clinical diagnosis of Parkinson's is made on the basis of medical history, as told you. Even neuroimaging, which can be used to obtain the estimation of this dopamine loss, that is also imperfect to diagnose this disease. Hence, only his medical history and neurological examination can help in the diagnosis of this disease. Now, what are the causes of Parkinson's? There are two types of causes, you can say. First of primary or juvenile, and second one is secondary. We cannot do anything with the primary causes. However, secondary causes, the first one is viral infection. Viral infection means post-encephalitis, Japanese bee encephalitis. These type of infections the patient may suffer that can lead to Parkinson's disease. Drugs like antipsychotic, patients of schizophrenia or any depression, they may be taking such sort of drugs. Though those patients are also prone to this disease. Now, all these factors which are secondary, they are reversible factors. You can stop the use of these causes, and patient will recover very soon. Third one is toxins like methyl phenyl tetrahydrofuran, vascular causes like multiple infarcts in the brain of the patient, or maybe due to hypotensive shocks. Head injury, one particular word is used for this head injury. This is a punch drunk syndrome, that is called repeated head traumas, that can lead to this disease Parkinson's. And metabolic causes like abnormalities in the parathyroid hormones or hypothyroidism, those patients are also prone to this disease.
Now, drug-induced Parkinson, it is reversible because although they may require weeks or months after discontinuation, some dopamine antagonists, neuroepileptic agents, atypical neuroepileptic agents, antiemetic drugs, fluorogen, synergine. However, we use these medicines very frequently, but even then, if we should try to avoid the use of these medicines very frequently. Because this is one of the picture which clearly shows substantia nigra, and this is basal ganglion, this is cerebellum, reticular formation. This is the part of brain which is involved in this type of disease. This is anatomy of basal cell ganglia. I won't go in detail of this anatomy. Now you can see here, this is dopamine, the neurotransmitters between two because we know that our nerve cells are separated from each other. They are not connected directly. They transfer their message only through the synapses, and the messages are transferred with the help of these neurotransmitters. You can see in the right side, there is very good quantity of dopamine which are spreading messages very frequently. The strong message is being transferred. However, in Parkinson's disease, due to decrease in the release of dopamine, this message is weak and patient is not able to handle the disease. If we talk about prognosis, variable and depends partly on the age of onset. If symptoms starts in the middle life, the disease is usually slowly progressive and likely to shorten lifespan because complications of immobility and tendency to fall further causes causes to reduce the life expectancy of the patient. Onset after 70 years unlikely to shorten life and become severe because after 70 years very less life of the patient remains, and patient usually lives normal life after this. If disease occurs after 70 years of age. Sadhya Sadhya, as you know, Vatvyadi has been mentioned as Maharoop. तो इसको दुष्चिकित्स से इनक्यूरेबल कहा है सुश्रुत संहिता में. कंपवात को भी हम वातवादी मानते हैं, तो इसको भी हम इनक्यूरेबल अथवा कृष्णसाध्य अथवा असाध्य अवस्था में मान सकते हैं. कृष्णसाध्य तो नहीं कह सकते, असाध्य ही होती है. और चरक संहिता ने कहा गया है कि these disorders on account of their deep seated nature may or may not be cured even after careful treatment. इसलिए हमें इसको असाध्य श्रेणी में रख के चलना चाहिए. इसकी चिकित्सा करते हुए इसको हम कितनी देर तक रोक सकते हैं, कितनी देर तक हैंडल कर सकते हैं, पेशेंट को कितनी अच्छी लाइफ दे सकते हैं, उसके बारे में सोच करके इसकी चिकित्सा करनी चाहिए. तो मॉडर्न में तो पार्किंसंस का जो ट्रीटमेंट है वो तो केवल कार्बिडोपा लेवोडोपा का यूज करते हैं. लेवोडोपा जो कि दिस इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट ऑफ डोपामिन व्हिच इज नॉट रिलीज्ड इन आवर ब्रेन. वी जस्ट गिव द रिप्लेसमेंट ऑफ द डोपामिन टू द पेशेंट्स which further helps to improve the action of our internal liver, internal this dopamine, and side effects of this disease. This drug is particularly nausea. So we can just control the tremors and other symptoms of this patient with the help of giving dopamine. These are some dopamine agonists which can also be used. Now, agonist is a chemical that binds to a receptor and activates the receptor to produce a biological response. This biological further try to activate the dopamine releasing cells which are left healthy to increase the release of dopamine, this neurotransmitter. Now, the abnormality or impairment of voluntary movement can be reduced if we give this treatment. Currently used dopamine antagonists in Parkinson's disease are given in this list. You can see it. I will not be discussing this problem. Surgical procedures, if in the advanced stages when the drug is not effective, usually modern doctors advise some surgeries. Now this is called deep brain stimulation. Usually surgeon implants some electrodes in the brain. The electrodes which are connected to a generator, that generator is implanted in the chest. That sends electrical impulses to the brain, which can help to improve many of the symptoms of Parkinson's disease. Deep brain stimulation is the most often used in the later stages, you can say, later stages of the disease after levodopa is no longer effective, as I told you. Now come to Ayurveda, but in Ayurveda we can give.
फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आयुर्वेद में जो भी थेरेपी का हम निर्णय करेंगे या चयन करेंगे, हमें सीधा का सीधा देखना कि जो जो औषधियां अथवा प्रोसीजर्स वात व्याधि को शांत करते हैं, वात को कंट्रोल करते हैं, उसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करना है ताकि उसके वात का शमन हो सके। तो अभ्यंग में हम स्नेह का प्रयोग करते हैं। स्नेह का प्रयोग अभ्यंग और स्वेदन, स्नेह, उष्ण और स्निग्ध गुण का प्रयोग। अब सब जानते हैं कि वायु के जो गुण थे उसमें रूक्ष और शीत गुण, जैसे मैंने पहले बात की, उसका सबसे अधिक बढ़ जाने के कारण वो शरीर में वात का प्रकोप करके शरीर में वात व्याधि को उत्पन्न करते हैं। उन गुणों को सर्वदा सामान्य में सामान्य वृद्धि कारण ह्रासस्तु विशेषच, ह्रासस्तु विशेषच वाली बात है, विपरीत गुणों का प्रयोग करके हमें उस गुणों को, उस लक्षणों को शांत करना है। जैसे अभ्यंग किया हमने, उसका स्वेदन किया। और शिरोधारा, शिरोधारा किसके अंतर्गत आती है? हम इसको मूर्ध स्नेह के अंतर्गत लेते हैं। जैसे केरलीय पंचकर्म में इसको मूर्ध स्नेह कहा गया। इसके और भी बहुत है, शिरोपिचू भी आता है, शिरोवस्ती भी आती है इसके अंतर्गत। हम शिरोधारा का प्रयोग रोगी में इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। वस्ती इज स्पेशली हेल्पफुल इन द डिसऑर्डर्स टू पैसिफाई द वात दोष। अब वस्ती के बारे में क्या कहा गया कि शाखा गता कोष्ठ गताश्च रोगा मर्मूर्ध सर्व अवयव अंगयास ये संति तेषाम नाहि कश्चित अन्यो वायु परम जन्मनि हेतुरस्ति। तो शाखाओं में गए हुए दोष अथवा कोष्ठ के दोष, मर्म हो, चाहे शरीर के किसी भी स्थिति में दोष पड़े हुए हो या कहीं भी गए हो, तो उन सबको शांत करने के लिए वायु से अच्छी, या वायु के कारण होते हैं, वायु से अलग कोई भी ऐसी दोष नहीं है जो इस सब रोगों को उत्पन्न कर सके। तो और वायु के क्या कार्य हैं? वीण मूत्र पित्तादि मलाशना विशेष संघात करे सहजस्मात् तस्य अति वृद्धस्य शमाय नान्य दोषी बिना विशेषज्ञ किंचित। वह वायु जो मल मूत्र, राइट, पित्त, इन दोषों का धातुओं के साथ अथवा इसका हमारे टॉक्सिन जो बॉडी में पैदा होते हैं उनको हमारी धातुओं के साथ जोड़ने में अथवा उसको वहां से अलग करने में वायु ही एक मुख्य चीज है जो कि इन सब कार्यों को करती है। तो उस वायु का शमन करने के लिए वस्ती से अधिक चिकित्सा कोई अच्छी, वस्ती से अधिक अच्छी चिकित्सा कोई भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने इसको आधी चिकित्सा कहा है, कुछ लोग इसको पूरी चिकित्सा कहते हैं। इसे लास्ट लाइन में कहा तस्मात् चिकित्सार्धम सर्वां चिकित्सार्धम वस्तिम एक कही। तो वायु के गुण क्या है, क्या करती है वस्ती? वस्तिर वै स्थाप्यता सुख आयुर बल बल अग्नि मेधा स्वर वर्णकृत सर्वार्थकारी शिशु नाम नृत्य सर्वदा। वस्ती जो वै को स्थापित करती है और सुख आयु का वर्धन करती है, शरीर में बल को बढ़ाती है, अग्नि को बढ़ाती है, स्वर वर्ण को शरीर में स्थापित करती है या उसका नियमन करती है, उसको सही स्थिति में लाती है। सर्वार्थकारी, सभी प्रकार के अर्थों का सभी कार्यों को करने वाली, शरीर की सभी व्याधियों का शमन करने वाली। शिशु मृत युनाम, शिशुओं में, वृद्धों में, जवान या युवा में, सभी में इसको बिना किसी चिंता से, बिना किसी दिक्कत से दिया जा सकता है। अब दो प्रकार की वस्ती हम इसके प्रयोग करते हैं व्यक्ति में, निरूप वस्ती और वासन वस्ती। अब निरूप वस्ती, कभी भी वस्ती का प्रयोग करना हो तो हम इसको क्रम के अनुसार कहते हैं, काल क्रम और कर्म काल और योग वस्ती, तीन प्रकार के कर्म इसकी विधि कही गई है। कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती। कर्म वस्ती में 30 वस्ती देते हैं जिसमें 18 अनुवासन होती हैं और 12 निरूप वस्ती होती हैं। काल वस्ती में 16 होती हैं, इसमें 8 कर्मवस्ती में 16 होती है और योग वस्ती में 8 होती है। इसी प्रकार इसको हम आधा आधा करके आगे से आगे चलते जाते हैं। तो निरूपवस्ती के गुणों की बात करें तो नाभि परिश्रम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा शक्रि दोषम विलोड्य संस्नेह कायम सपुरुष दोष सगमे सुख निधि कृत सयवस्ती। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो निरूपवस्ती और अनुवासन वस्ती को अल्टरनेटिव प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि निरूपवस्ती का प्रयोग करने पर शरीर से दोषों का तो निर्गमन हो जाता है, उसके साथ शरीर में रूक्षता उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो उस रूक्षता को, उस रूक्षता के कारण वायु का प्रकोप होने की संभावना होती है, अधिक मलों का नाश और शरीर में दोष निकल जाने से। तो उस रूक्षता को नष्ट करने के लिए, उस रूक्षता को कंट्रोल करने के लिए अनुवासन वस्ती साथ साथ दी जाती है। और अनुवासन वस्ती का कार्य और भी होता है कि अनुवासन वस्ती शरीर के साथ एक तो भृंगण भी करती है, वायु का शमन करती है, साथ में वो शरीर से मल का निर्हरण करती है। तो अनुवासन वस्ती के गुणों में इसको देना कब चाहिए? देह निरूहण, निरूपवस्ती से देह को शुद्ध किया गया हो, विशुद्ध मार्गे, मार्ग सब शुद्ध हो गए हो, स्नेहम वर्ण बल प्रदम च। तो उसके पश्चात जो हम स्नेह देते हैं अनुवासन वस्ती की तरफ, शरीर के वर्ण और बल को बढ़ाने वाला होता है। ना तैल दानात परमस्ती किंचित द्रव्यम विशेषण स्मरणार्थ। तैल देने के अलावा और कोई ऐसा दूसरा द्रव्य नहीं है जो शरीर में वायु के दोषों को शमन कर सके।
स्नेहन रोक्षम लघुताम, ये कार्य कैसे करता है? स्नेहन जो है वो शरीर की रूक्षता को नष्ट करता है। लघुताम गुरुत्वाद, जो गुरु गुण है स्नेह का, वो वायु की लघुता को नष्ट करता है। और जो शीत गुण है उसको उष्ण गुण नष्ट करता है। औषण्याज शैत्यम पवनस्य हत्वा, ये वायु के जो 3 गुणों का इसने यहाँ वर्णन किया गया कि तीनों गुणों को स्नेह के ये गुण जो है वो नष्ट करते हैं। तैलम ददात्य आशु, मतलब तैल देने के पश्चात या स्नेह देने के पश्चात मन प्रसादम, मन का प्रसादन होता है। वीर्य बल वर्ण मथापि पुष्टिम, वीर्य बल और वर्ण की पुष्टि होती है। तो इसका एक बहुत अच्छा आयुर्वेद में जो भी हमारी संहिताओं में वर्णन किया जाता है उसमें एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कुछ ना कंपैरिजन किया जाता है। उसी में यहाँ लिखा है कि मूल निषिद्धे यथा द्रुमो श्यानी लचते कोमल प्रभाग्रह, हम किसी पेड़ के मूल में अगर उसका सिंचन करते हैं तो उसको अच्छे अच्छे पल्लव और पुष्प निकल आते हैं। तो उसी प्रकार गुदा को, आयुर्वेद में गुदा को शरीर का मूल कहा गया है। तो वहां पर हम अनुवासन वस्ती देने से क्या होता है, समय के अनुसार काल वस्ती देते हैं तो उसमें हमारे शरीर के भी उसी प्रकार पुष्टि होती है। क्या क्या वस्ती हम आयुर्वेद में इसका निर्णय करते हैं, क्या क्या देते हैं? तो हम इसमें अधिकतर जो वस्तियां, वैसे तो मैंने जैसे कहा कि ना तो इसकी कोई डिजीज का वर्णन है आयुर्वेद में कंपवात के नाम से, तो ना ही इसकी चिकित्सा कंपवात के नाम से ऐसी कोई दी गई है। तो जो जो औषधि, जो जो वस्ती शरीर में वायु का अनुलोमन करे, शरीर का वृंहण करे और जो जो लक्षण दिए गए उनका शमन करे, तो उस वस्तियों का हम अपनी बुद्धि से प्रयोग करके उसका चयन कर सकते हैं। तो सबसे जो इसमें रिकमेंडेड वस्ती हम करते हैं वो है मुस्तादी यापना वस्ती। इसको मुस्तादी राज यापना वस्ती के नाम से भी कहा गया है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। अष्टांग हृदय ने जो इस प्रकार के कंपन वगैरह बड़े रोगों में जो वस्तियों का प्रयोग करने के लिए कहा हुआ है, बड़ा गुरुत्यादि वस्ती, द्विपंचमूलादि वस्ती, बृहद पंचमूलादि वस्ती। तो आप देखेंगे सारी की सारी वस्तियां जो अष्टांग हृदय ने वर्णन की हैं, सारी की सारी वात शामक है, वात के शमन करने वाली है। जैसे पंचमूल है, बृहद पंचमूल है, लघु पंचमूल है, द्विपंचमूल है, सभी के सभी वात शमन में सबसे उत्तम इन सबको कहा गया है। तो इन सब वस्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप सोचते हैं कि कोई वस्ती इसमें प्रयोग की जा सकती है, सिद्धि स्थान में बहुत सारी वस्तियां हैं, वात व्याधि का चैप्टर चिकित्सा स्थान में वहां भी दी गई। तो अपने निर्णय अनुसार रोगी की स्थिति के अनुसार दो दूसरे समूचना देख करके, उसकी संप्राप्ति देख करके, किस वस्ती से हम संप्राप्ति का विघटन बढ़िया कर सकते हैं, उस वस्ती का प्रयोग निर्णय करके हमें कर लेना चाहिए। इसी प्रकार अगर अनुवासन वस्ती की बात करें तो बला तेल, अश्वगंधा तेल, बला अश्वगंधा तेल, माच तेल, इन सब वस्तियों का प्रयोग हम अनुवासन वस्ती के रूप में कर सकते हैं। इसको अनुवासन वस्ती के रूप में भी दे सकते हैं, आप मात्रा वस्ती के रूप में भी दे सकते हैं। तो मात्रा वस्ती जो होती है अगर देनी हो तो रोगी को हम इसको भी, जैसे मदन फल को अनपायित कहा गया है, कि हम इसी प्रकार मात्रा वस्ती का किसी भी पेशेंट्स को कितने भी काल तक हम दी जा सकती है। उसकी मात्रा वस्ती की डोज बहुत कम होती है। 3 प्रकार की डोज अनुवासन वस्ती कही गई है, षटपली तुम प्रोक्ता, त्रिपली मध्यम भेद, किनियसी सा अर्धफला, त्रिधा मात्रा अनुवासन है। तो सबसे जो उत्तम डोज है इसकी स्नेह वस्ती की, वो होती है 6 पल। 6 पल अर्थात लगभग 240 से 250 ml आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। 250 ml, 120 ml और 60 ml। तो मात्रा वस्ती सबसे कम 60 ml होती है, अनुवासन वस्ती 120 ml और स्नेह वस्ती 240 ml के आसपास हम इसको मान सकते हैं। संशमन योग की बात करें तो कपी कछु बीज चूर्ण, जेंडोपा ग्रेन्यूल्स। तो कपी कछु बीज चूर्ण के ऊपर क्योंकि इस सबसे अधिक प्रयोग जो शमन औषध में किया जाता है वो कपी कछु बीज चूर्ण का किया जाता है। 1978 में एक जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें कि इस कपी कछु बीज के ऊपर जो रिसर्च की गई थी उसका वर्णन किया गया। तो उसमें कहा गया था कि ये जो म्यूकिना प्यूरियंस, जो कपी कछु है जिसको हम बोटानिकल म्यूकिना प्यूरियंस है, इसमें लीवाडोपामिन या फिर इसको एल्डोपा कहते हैं, इसके सीड्स में पाया जाता है। और 1978 में रिसर्च हुई, 1990 में हुई, इसके बाद 1990 उसके बाद 1937 में भी रिसर्च हुई थी। तो 1990 में इसको पूरी तरह कन्फर्म करके इसके बारे में बताया गया कि इसमें लीवाडोपामिन होता है। तो इसलिए हम इसको रोगी को जो लीवाडोपा नाम दे करके अगर कपी कछु बीज का चूर्ण प्रयोग करेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें भी देखने को मिलते हैं और आपको भी देखने को मिलेंगे। और बाकी वृंगण औषधियां जो होती हैं जैसे शंख पुष्पी है, अश्वगंधा है, जटामंसी, इनका प्रयोग करके आप इस रोगियों में चिकित्सा कर सकते हैं। मैं ये थोड़ी सी हमारी रिसर्चेज जो हमारे पास हुई है इसमें हमने बहुत सारी वस्तियां हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें एफिकेसी वस्ती में मुस्तादी यापना वस्ती और माच तेल की अनुवासन वस्ती, और ओरल ड्रग में हम बात करें तो कपी कछु बीज चूर्ण, इसका प्रयोग करके हमने पेशेंट को किसी प्रकार की मॉडर्न औषधि ना दे करके इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो उसमें रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो कौन कौन से लक्षणों के आधार पर हमने उसका एनालाइज किया था रोगी को, तो कंप, गतिसंग, वाकवृत्ति, स्तंभ, विषाद,
सैलिवेशन, हैंडराइटिंग, फ्रीजिंग, पोस्टुरल इंस्टेबिलिटी, ब्रैडिकार्डिया, ये सभी देखेंगे जो हम पहले डिस्कस किए थे। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट हमने रखा इन्हीं सब लक्षणों का जो कि हमें रोगी में मिलते हैं, जो कि संहिताओं में हमें वर्णित किए गए हैं। तो बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, जो इसकी वैल्यूज आपके सामने है। परसेंटेज इंप्रूवमेंट देखिए, अधिकतर पेशेंट्स में हमें हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये जो पी वैल्यू लेस देन 0.001 होती है हाईली सिग्निफिकेंट को शो करती है, लेस देन 0.05 सिग्निफिकेंट को शो करती है। अब देखेंगे सब एक दो सिम्टम्स यानी कि सैलिवेशन, फ्रीजिंग फिनोमिना और पोस्टल इंस्टेबिलिटी, इनमें तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले, बाकी सभी सिम्टम्स में हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं। तो इससे हम वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंस टू ट्रीट द पेशेंट विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो आप भी इसमें यूज करेंगे हम सब लोग तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिलते हैं और इसमें हमें कॉन्फिडेंस भी आता है और रोगी को भी लाभ मिलता है, मॉडर्न ड्रग्स से भी छुटकारा मिल जाता है। थैंक्स। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Thank you very much, sir, for this informative lecture. Conditions like Parkinsonism is very well managed by Ayurveda and Panchkaram, and the video presentation is highly beneficial for even all the delegates, all the clinicians, and all the aspirants. कीजिए अपने आप का भी म्यूट है। Thank you very much, sir. Next lecture will be of Shalakya Tantra at 6 p.m. by Dr. Vijayant, sir. Anybody has any queries, then please ask. Anybody has any question? Thank you, sir. You may leave the meeting now. Thank you.